गुड इवनिंग एवरीवन. अभी भी कुछ पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं, सो विल वेट फॉर नेक्स्ट 5 minutes एंड देन विल स्टार्ट. जस्ट 5 minutes. पीपीटी कौन ऑपरेट करेगा वहां से? पीपीटी कौन ऑपरेट कर रहा है वहां से? अभी मैं हूँ यहाँ पर. मैं मतलब सदफ. अच्छा मैम, शेयर कर हाँ. दीजिए पीपीटी.
Good evening, everyone. Today's our topic for career counseling is career opportunities in astronomy and astrophysics. Basically, Anees Defense Career Academy has come up with an idea of career counseling series. Why we call it a series? Because in this, we'll be conducting these lectures for next 5 to 6 days, and we'll be informing you about careers which are lesser known, which have demand in market but are on are not on low profile, are lesser known. तो इसमें हम लोग बेसिकली 4 से 5 दिन हम लोग वो करियर अपॉर्चुनिटीज आपको बताएंगे जो है मार्केट में एग्जिस्टिंग है, जिसकी डिमांड बढ़ रही है डे टू डे, बट यू मेनी पीपल डोंट नो अबाउट दिस अपॉर्चुनिटीज, राइट? सो वेलकम to Career Counseling Series by Anees Defense Career Institute. Also, our contact number is mentioned. In case आपको कोई भी queries है, तो please feel free to contact us on this number. Next. Can anyone tell what is astronomy? Astronomy, according to you, what is astronomy? Okay. Basically, जब टेलीस्कोप इन्वेंट हुआ था एंड ऑल, तो बाइनोकुलर्स के जैसे यूज करते थे कि दूर के जो ऑब्जेक्ट्स है वो हम लोगों को पास में दिखाई दे। तरीके से यूज किया जाता था टेलीस्कोप जो है, बाइनोकुलर्स जो है वो इससे किया जाता था कि दूर के ऑब्जेक्ट पास दिखे। बट एक बहुत ही मेजर चेंज आया व्हेन इट वाज यूज्ड हॉरिजॉन्टली। मैम आवाज नहीं आ रही जोर से। सोनाली मैम आवाज नहीं आ रही। एक सेकेंड मैम, एक सेकेंड। अभी आवाज आ रही है? मैम आ रही है आवाज। जी, तो बेसिकली बहुत ही बड़ा चेंज हुआ एस्ट्रोनॉमी और ये सब देखा जाता है, उसमें एक बहुत ही बड़ा चेंज हुआ जब बाइनोकुलर्स जो होते हैं, टेलीस्कोप जो होते हैं, उसको हॉरिजॉन्टली देखा गया, राइट? सो देयर वाज वन पर्सन, नेक्स्ट स्लाइड। देयर वाज वन पर्सन, एक साइंटिस्ट थे पुराने जमाने के, जिन्होंने कहा कि मैं आसमान में देखता हूँ, आई विल सी इट हॉरिजॉन्टली एंड लेट्स सी इन स्काई व्हाट कैन वी सी। And through this, many changes occurred in astronomy. So, जो आसमान में, जो यूनिवर्स में स्टार्स हैं, जो यूनिवर्स में और भी अपने स्टार्स एंड ऑल है, वो सब दिखने लगे. And then a new dimension came up about astronomy, that there are different planets, there are different there are many things in galaxy, and then research on those things started, right? So astronomy became very famous, and people started researching on various things about galaxy, which are the planets, how how far which planet is, what are stars, what are galaxy, and various other things. The research on various other things started, right? And this has saved mankind to a big extent, because बहुत सारे जो दुर्घटनाएं हो सकती थी, there are many asteroids and all which come towards Earth, was basically prevented by hitting Earth. Earth को hit करने से उनको prevent किया गया, and like this many बहुत सारी चीजें ऐसी जो गलत हो सकती थी, जो अर्थ पे नुकसान पहुंचा सकती थी, जो सेव की गई, राइट? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। But today we are not going to talk only about astronomy, but it is about astrophysics, right? So how does
astronomy and physics together is a career opportunity for students, and it is huge career option. And like, you know, for future, if any student has a little bit interest in physics and maths, but this as a career, I'll tell you. Next slide, please. Next slide, please. Sadaf ma'am. Okay, so this telescopes which were invented from time to time. बहुत सारे ऐसे टेलीस्कोप है जो बनते रहे, जो इन्वेंट होते रहे, and for this reason physics is very important, and maths also, because maths is reason behind that is calculations. You need to do big huge number calculations and all, कि अगर किसका क्या रहा तो हम लोगों को कितने दूर का ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, and like, you know, to collect data from various millions of light ages, दूर से डाटा कलेक्ट करना and then कलेक्ट करके डाटा सेव करना and various other things. There are huge data process and everything happening in this, right? For that you need huge calculations to be done. For that you should have knowledge of maths and physics also, because physics के ही ये सब, like, you know, you want to pursue your career in astronomy researcher, then you need to know physics and maths very well. You need to be good with maths and physics. You need to be good with maths and physics, and then you will be able to pursue this career. So these are various satellites. These are various telescopes which were invented from time to time, and you can see the size. आप इसमें साइज भी देख सकते हो कि साइज कैसे चेंज होती गई है, मॉडिफिकेशंस जो है वो कैसे चेंज होते गए, एकदम छोटे टेलीस्कोप से बड़े टेलीस्कोप्स, एंड कुछ टेलीस्कोप तो इतने बड़े होते हैं कि लाइक, यू नो, इट इज ऑलमोस्ट 45 meters long and various other things. तो लाइक, यू नो, बहुत बड़ा बड़ा ह्यूज टेलीस्कोप्स होते हैं, एंड वो टेलीस्कोप स्टैंड करे इन ऑल काइंड ऑफ वेदर, उसके लिए भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है. तो अ लॉट ऑफ इन रिसर्च वर्क इज इन्वॉल्व इन दिस. बहुत ज्यादा रिसर्च वर्क इन्वॉल्व होता है इसमें, एंड फॉर दैट यू नीड टू नो नॉलेज ऑफ फिजिक्स एंड मैथ्स. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. आई होप माई वॉइस इज क्लियर नाउ. अभी हम लोग ने आपको टेलीस्कोप दिखाया कि टेलीस्कोप कैसे कैसे चेंज हुए. स्टार्टिंग एज में कैसे थे, छोटे टेलीस्कोप हुआ करते थे, अभी टेलीस्कोप की साइज बढ़ती जा रही है, एंड लाइक, यू नो, द वे इट इज मैन्युफैक्चर्ड, द वे इट हैज शेप एंड ऑल इज चेंजिंग. तो ये एक पिक्चर है जो आपको दिखाता है कि पहले के टेलीस्कोप से कैसे दिखता था स्काई जो है वो कैसे दिखता था. तो अगर आप फर्स्ट पिक्चर में देखेंगे तो एक डॉट जैसा दिखाई देता था, एक कोई गैलेक्सी होता था या एक कोई स्टार होता था, तो वो एक ऐसे डॉट जैसे दिखाई देता था. बट जैसे जैसे टेलीस्कोप चेंज होता रहा, जैसे जैसे टेलीस्कोप में इम्प्रूवमेंट होता रहा, एंड उसकी डेटा कैप्चर करने की कैपेसिटी बढ़ती गई, उस तरह उस चीज से हम लोग जैसे गैलेक्सी में देख सकते हैं, हम लोग जैसे यहाँ से टेलीस्कोप से गैलेक्सी में देख सकते हैं, स्टार्स की जो पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं वो भी ज्यादा क्लियर होती गई, राइट?
तो इस तरीके से जो क्लिक करने का जो होता है, डाटा कलेक्ट करने का जो पिक्चर्स होते हैं वो भी बहुत ज्यादा क्लियर होते जाते हैं। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट अ एस्ट्रोफिजिशियन रिसर्चर डज। ही इन्वेंट्स टेलीस्कोप एंड ट्राई टू कलेक्ट better pictures, better information, better data from universe. Next slide, please. Ma'am, next slide, please. बेसिकली अगर किसी को भी फिजिक्स में इंटरेस्ट है, मैथ्स में इंटरेस्ट है, अगर उनको इंटरेस्ट है टू नो अबाउट स्काई के बारे में, अगर उनको जानने का, स्टार्स क्या होते हैं, प्लैनेट्स क्या होते हैं, कितने दूर होता है कौन सा प्लैनेट एंड ऑल, अगर इसमें कोई भी इंटरेस्ट है, दिस इज द बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटी दैट वन कैन परस्यू। क्योंकि इस चीज में कभी भी जो रिसेशन नहीं आता है, रिसर्च वर्क में कभी भी रिसेशन नहीं आता। रिसर्च इज ऑलवेज ऑन गोइंग प्रोसेस, बिकॉज मैनकाइंड जो होता है उसमें हम लोगों को इम्प्रूवमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम लाना ही पड़ता है। अनलेस एंड अनटिल देर इज प्रोग्रेस, अनलेस एंड अनटिल देर इज इम्प्रूवमेंट, mankind will not survive, and for survival we'll have to keep research on. Sadaf ma'am, next slide please. This is little information about wavelength. तो कोई भी टेलीस्कोप जब बनता है तो उसकी क्या वेवलेंथ होती है, राइट, फ्रॉम अर्थ टू डिफरेंट प्लैनेट्स टू डिफरेंट गैलेक्सी ऑब्जेक्ट्स, हमारा क्या वेवलेंथ होता है, अगर रेडियो है तो उसका वेवलेंथ कैसे रहेगा, एंड ऑल वेरियस अदर थिंग्स, राइट। तो वेवलेंथ पे भी बहुत ज्यादा मैटर करता है, टेलीस्कोप से सैटेलाइट एंड वेरियस अदर थिंग पे भी वेवलेंथ से भी बहुत ज्यादा मैटर करता है कि हम लोगों को जो डाटा मिल रहा है उसकी क्लैरिटी कितनी है, right? So a physician needs to work on this wavelengths and various other things, and for that also maths is important. आपका जो calculations and all होता है वो important होता है, right? There are only two earth-based windows, one in optical and one in ratio. तो अर्थ विंडोज यानी अर्थ का जो अर्थ से सैटेलाइट की पास जो इंफॉर्मेशन इन आउट करना होता है उसके विंडोज होते हैं, एंड दो ही काइंड के विंडोज है, दैट इज ऑप्टिकल एंड रेशियो, एंड थ्रू दिस विंडोज ओनली यू कैन ट्रांसफर डाटा। सो यू नीड टू वर्क ऑन दिस, एंड बेसिकली इसी चीज पे वर्क करके आपको डाटा कलेक्ट करना होता है, एंड यू नीड टू वर्क, एंड बहुत सारा जो डाटा मिल जाता है उसको मर्ज करके एक क्लियर डाटा आपको क्रिएट करना पड़ता है। सो basically there are two windows, optical and ratio. If you become like in astronomy, if you think of making your career, then these are the two windows you need to work on. This one, next slide please. So this is about basically the typical modern ratio telescopes, that is GMRT. And you will be surprised to know this is GMRT, that is Giant Meter Wave Radio Telescope. This is like, the frequency of this is 100 to 1450 megahertz. So इतना frequency है उसका, and you will be surprised to know कि ये जो टेलीस्कोप बने हुए हैं ये पूना से नासिक के हाईवे के पास बने हुए हैं। पुणे से नासिक के हाईवे के पास, इफ यू ट्रैवल एनी टाइम पूना से नासिक की तरफ, तो पूना से 80 किलोमीटर्स पे आपको ये टेलीस्कोप जो है वो दिखाई देंगे, एंड इट इज like it is spread in 30 kilometers. पहले क्या होता था ना, एक टेलीस्कोप होता था, right? Then टेलीस्कोप का साइज बढ़ते गया and it was like 5 kilometers का भी एक टेलीस्कोप बना. But to manage that telescope, it was very difficult, because कैसे होता था ना कि उन लोगों का जो भी टेलीस्कोप बनता है
उसका एक वेवलेंथ होता है, एक स्पेसिफिक एरिया होता है जहां तक वो एक्सपोज कर सकते हैं एंड देन वहां से डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, राइट? बट द डिमांड इंक्रीज्ड, डिमांड वाज लाइक टू गैदर बियॉन्ड दैट रेंज, अपना डाटा जो कलेक्ट करना होता था दैट वाज बियॉन्ड दैट रेंज. So now what new telescope is coming on is कि instead of having one telescope of 5-6 kilometers, इतना बड़ा 5-6 किलोमीटर के जितना एक टेलीस्कोप बनाने से अच्छा what are they doing now is 30 kilometers का एक एरिया होता है and in round circle they place many telescope. बहुत सारे टेलीस्कोप जो होते वो फिट करते थे. तो अगर आप पूना से नासिक की तरफ जाएंगे इन 80 किलोमीटर्स फ्रॉम पुणे, यू कैन सी दिस फ्रॉम रोड ऑल्सो, हाईवे ऑल्सो. दिस इज अप्रोक्सीमेटली 30 एंटीनाज. 30 एंटीनाज है जो 45 मीटर्स ईच का है. एक एंटीना जो है वो इतना बड़ा होता है एंड इट इज स्प्रेड इन 30 किलोमीटर्स ऑफ एरिया. तो ऐसे सर्कल बेस्ड में है 30 किलोमीटर्स में 30 एंटीनाज. एंड नाउ व्हाट दे डू इज उनका लोकेशन जो है 30 किलोमीटर्स में स्प्रेड है. सो उनका रेंज ऑफ डाटा कलेक्शन इज स्प्रेड, इज वाइडर नाउ. जो एक एंटीना कलेक्ट कर सकता था डाटा, वो इंक्रीज हो गया. द रेंज इंक्रीज इन 30 किलोमीटर्स, राइट? तो नाउ ये 30 एंटीनाज जो है दे कलेक्ट डाटा and they merge this data and create one single picture, a clear picture of galaxy. तो टेलीस्कोप्स का जो पुराना वर्जन था इज चेंजिंग नाउ एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो यूरोप कंट्री में एक जगह और भी टेलीस्कोप का सिमिलर काइंड ऑफ टेलीस्कोप का बन रहा है विच इज इन 150 किलोमीटर्स. इट विल हैव 150 किलोमीटर्स में स्प्रेड रहेगा वो एरिया जो है. जो एंटीनास बनने वाले हैं 150 किलोमीटर्स में रहेंगे एंटीनास एंड अप्रोक्सीमेटली 200 to 250 एंटीनास फिट होंगे. सो इट इज करोड़ का प्रोजेक्ट which is expected to get completed by 2030 in European countries. Is one partner for that project. India is also a partner for that project. जो यूरोपियन कंट्री में बन रहा है इज सिमिलर काइंड ऑफ एंटीनास स्प्रेड इन 150 किलोमीटर्स टू 250 एंटीनास. उसमें इंडिया भी एक पार्टनर है, एक कंट्री है पार्टनरशिप में, बिकॉज दिस इज नॉट वन पर्सन या वन कंट्रीज वर्क. इट नीड्स टू बी वर्कड एज अ टीम. तो इंडिया भी एक पार्टनर है उस चीज के लिए. सो द वे वर्ल्ड इज चेंजिंग इन telescope kind of thing is high. So जैसे जैसे चीजें चेंज होगी जॉब अपॉर्चुनिटीज भी इसमें इंक्रीज होगी. The only thing is that you are interested in physics, maths and astronomy. Next slide please. So the career options that you can go for in astronomy and astrophysics is basically first track is you should have, see, you go by any field, but most important is physics, chemistry and maths in your 12th standard. If you don't have biology, it is okay, but physics, chemistry and maths is compulsory in 12th standard science. तो आपका जो स्कोप है आगे चल के वो बढ़ जाता है. For science research, any science research job, physics, chemistry and maths is very important in your 12th standard. So first way to go for astronomy and astrophysics is basically high school in 12th standard physics, chemistry, maths. Then you can go for BSc and MSc physics, applied physics. Then you have to do PhD. If you want to become a researcher, अगर आपको researcher बनना है, not only in astronomy or astrophysics or anything, if you want to become a researcher, PhD is compulsory. PhD is compulsory. Unless and until you do PhD, you cannot become a researcher. Officially researcher आप नहीं बन सकते कि अगर आप PhD नहीं करते तो इसमें पहले आपने BSc, MSc कर लिया, उसके बाद you can go for PhD in astronomy and astrophysics, then postdoctoral fellowship, researcher and faculty member.
in any research institute. So this can be your first track to go for astronomy and astrophysics. Your second track can be high school in PCM, physics, chemistry, maths. Then you can go for MTech, BTech, MTech. BTech, MTech, because you need to have technology knowledge also. BSc will give you different kind of approach, and in physics will give you different kind of approach, and engineering will give you different kind of approach. So you can choose according to your interest, right? And PhD in astronomy and astrophysics. Then after completing your graduation, you can go for PhD in astronomy and astrophysics, and then it is similar like doctorate and faculty member in research, right? Then third can be high school in PCM, then BTech, MTech, and engineering. Engineering is more suggested in instrumentation if you're going for this. But third track agar aap jate ho, where you do only engineering, then you cannot go for research work. Aap research work ke liye nahi cha sakte, because as I mentioned, if you want to become a researcher, PhD is compulsory. But yes, you can become engineer, because like, you know, building up the antennas and maintaining it, and उसमें पूरा clarity देखना कि हो रहा है नहीं हो रहा है, data capture हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, and all. They need engineers, good engineers. Then you can become उस project के engineers. You can become. You cannot become researcher, but you can become engineer of that project of astronomy and astrophysics का जो भी telescope का जो भी project चल रहा होगा, उसके आप engineers बन सकते हो. But if you want to become researcher, that is scientist in this, then you have to do PhD. And doing PhD from renowned college is more suggested than any college. Because अगर आप renowned college से करते हो तो आपकी value भी, आपकी degree की value भी उतनी ही होती है, and because आपकी degree की value उतनी होती है, आपका आगे का progress भी वैसे ही होता है, आपको जो projects मिलते हैं वो भी वैसे ही मिलते हैं, because all research work needs funding. जितना भी research work होता है उसके लिए funding चाहिए होती है. So like, you know, obviously they see कि आपको कितना exposure मिला है school time में, college time में, how is your knowledge, how is your skill, ये सब देख के आपको फंडिंग मिलती है. तो यस, अगर आप एक रिनाउंड कॉलेज से आपका पीएचडी एंड बीटेक एंड ऑल करते हैं तो फंडिंग मिलने में भी ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होती, बिकॉज यू आर स्किल्ड. आपको वो सब स्किल्स कॉलेज टाइम में ही सिखाई जाती है. तो यस, यू कैन गो फॉर फंडिंग्स एंड ऑल एंड बिकम अ रिसर्चर. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. So these are few colleges which we can suggest you to become like to do your PhD in astronomy and astrophysics in India. There is TIFR Pune, Mumbai, Bangalore. There is IIA in Bangalore, RRI in Bangalore. So these are few names, few colleges that we have listed that can have that you can go for PhD in astronomy and astrophysics. So we also suggest ISER. IISER, ISER in Pune, Kolkata, Mohali, Bhopal, Tiruvandrum and Tirupati. So आप जब PhD करते हो उसी टाइम पे आपकी internship भी शुरू हो जाती है. So you start earning with your PhD, right? And you work under few scientists and you gain more knowledge. So these are few colleges which we suggest you if you want to do your PhD in astronomy and astrophysics. Next slide. So my closing remark for this will be, astronomy and astrophysics is an exciting and worldwide field. Like, you know, it has a lot of scope in future, currently also, in future also. The only thing that depends is your interest. As I mentioned earlier also, your interest in astronomy, physics and maths is very important. If you have interest in these three things, you can openly go for this career, and you can, like, you know, if you do well during your fellowship and everything, sky is the limit for you. Many concepts and skills are involved, like physics, maths, theory, instrumentation, technology, and big data. Though we have learned a lot about the universe, there is a lot more waiting to be discovered out there. The sky is not the limit.
there is significant growth and activity in India in this field. Yes, there are many private players also which are coming in. बहुत सारे private companies also हैं जो इसमें आ रहे हैं. Like, you know, planning to launch rockets and various other things in space. So there are many private companies also which are coming in, and government has given them permission for all this thing. So yes, there is a lot of scope in this field. There are excellent opportunities for young minds interested in the field here again. The sky is not the limit. Some years from now, I expect somebody from the youngsters in the audience today should be standing here giving this kind of lecture. So yes, if you are interested and if you choose to go for this as your career, one day you can also become scientist, achieve great heights, and then deliver a lecture like this. Next slide, please. So in previous slide, I mentioned there is a lot many things which is still not known to people, right? So what we have already learned about universe is what are the basic constituents of the universe: planets, stars, nebulas, galaxy, many exotic objects that we have learned about already. Invisible, that is dark matter. What is the size and scale of the universe? तो ये बहुत सारी चीजें. What is the age of the universe? About 14 billion years. What is the evolutionary history of the universe? So there are few things we already know about universe. ये सब चीजें जो है past में जो researchers है, past में जो scientists है, they have already discovered this, right? How did they discover about the age of the universe and all? With the help of physics, chemistry, and biology. With the help of physics, chemistry, biology, and maths, they discovered the age of universe and various other things. So this all things is already known to the scientists, to world now. Right? Next slide, please. But there's a few things that still are to be learned. ये कुछ चीजें हैं जो अभी तक यूनिवर्स में जो चल रही है, हमें अभी तक उस चीज के बारे में कुछ भी नहीं पता, and we still need to do research on this. For example, regular matter, that all that we talked about so far makes up only 4% of the budget of the universe. Only 4% we know about the universe abhi tak. But still there are many things which are to be discovered, right? For example, dark matters. There is a significant amount of matter that does not produce any electromagnetic radiation at all, observed only through gravitational interaction with normal matters. तो ये कैसे होता है ये अभी तक नहीं पता. So there are many things which are still not known, and there is for this reason the research work is still in demand, because we need to know about these things, and only then the universe will increase, human beings will have growth in various fields, right? There is an even larger fraction of the mass energy balance of the universe that is made up of up to now unknown entity. It shows its influence in how the rate of expansion of the universe is affected. So there are few more things which are still unknown to us about universe, and for this reason, yes, if you plan to have your career in astrophysics, become a researcher, become a scientist, please go ahead, because it has even more better opportunities, and a basic salary of scientists, which is in demand, the course which is in demand and all, is approximately 8 to 10 lakhs per annum. This is the minimum salary which I'm mentioning. It is minimum 8 to 10 lakhs per annum, right? Next slide, please. So yes, if you plan to have your career in this, next slide. If you plan to have your career in this, yes, you can surely go for this. And it has greater, next slide, it has greater opportunities in future. Next slide. Yes, so this was all about
This was all about astronomy and astrophysics and the career that you can have through this course. But again, I'll repeat, PCM, Physics, Chemistry, Maths in 12th standard is very important. Your interest in astronomy is very important. And to know that you have interest in astronomy or not, the best way is there are many Olympiad examinations which you can start from grade 5th also. In grade 5th also, you can start your astronomic Olympiad exams. So you can, if your kid is in grade 5th or grade, 5th to 12th, there are many Olympiad exams which has specialization in astronomy. So make your kid apply, make your child apply for those Olympiad examinations. So when he'll study for this astronomic Olympiad examination, he'll understand, is he interested in this field or not? Once आपको पता है कि आप ये फील्ड में इंटरेस्टेड हो, it becomes easier for you to decide what you want to do after your 12th standard and how to get into research work. So the most important thing is your interest, and to know your interest, you need to apply for Olympiad exams. There are many Indian Olympiad exams. There are very many international Olympiad exams. So can I have the first slide, please? Can I have first slide? The slide before this. So our contact number is mentioned here. If you want to know about Olympiad exam, if your kid is from studying in any grade between 5th to 12th standard, and if you want to understand more about Olympiad exam related to astronomy, please feel free to contact us on this number. We'll guide you on astronomy Olympiad exams. If your kid has already cleared his PCM 12th standard, कॉल अस, विल गाइड यू. अगर अभी तक नहीं हुआ, अगर अभी तक उसका इंटरेस्ट आपको नहीं पता, we'll do career counseling free of cost. We don't charge anything for career counseling. We'll do career counseling free of cost. We'll understand his interest and guide you accordingly. So the contact number is mentioned on screen, that is 9890826344. So this is our contact number. You can call us anytime 24/7. Ask us details about Olympiad exams related to astronomy or any course related to astronomy and astrophysics. Also, if you want any guidance on BSc, MSc in physics or BTech, MTech to pursue your career in PhD, after that, you can feel free to contact us and we'll surely help you out to plan your career and get into this astronomy and astrophysics researcher, to become an astronomy and astrophysics researcher. So thank you. This was everything about astronomy and astrophysics. If you have any questions, please drop questions in chat box. We'll answer as early as possible. We'll reply to your questions as early as possible. Thank you.